रहा था, इतना बिल्ड कर रहा था। अगर दूसरा कोई होता ना स्पैम करके तो उसके अंदर घुस जाता। मैंने स्पैम भी किया था पर उसके अंदर घुस ही नहीं पाया। लोगों को गेम पता नहीं खत्म हो गया था। आराम से मीन पी रहा है और तुम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। आराम से मीनी पिएगा आराम से। यहाँ पे खड़ा होके आराम से मीनी पी रहा है। वहां से आया था ये तुम्हारी तरफ से। ये देखिए तीनों चारों ये सोई सोई जो लग रहे हैं ना, इधर से आया। क्या है आउट ऑफ कंट्रोल यार। एक सिंगल क्या देना भी मोगली यार तूने कुछ किया है यार, कुछ नहीं किया भाई।
PS4 को नर्फ क्यों नहीं करते मोगली? मेरे को जवाब देना है मोगली। तेरे को लग रहा है मोगली पीसी प्लेयर है? हेलो पक्का PS4 प्लेयर है भाई। यार नर्फ क्यों नहीं करते मोगली PS4 को ऐसे? या ये एम बोट है? एक मिनट रुक। DJ अंडरस्कोर सोल एक्स ये पाकिस्तान से है बंदा PS4 प्लेयर। और मोगली इम्पोर्ट कर रहा है मेरे ख्याल से बंदा, मान या ना मान, इम्पोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। इसको रिपोर्ट करने दे। कैसे पता इंपोर्ट कर रहा है? इसके बाद जब दो बंदे उड़ रहे थे ना वहां में, उनको 30-30 के 3 और 62 के 4 मारे हैं। वो तो कई बार लग जाता है। उसने L2 स्पैम कर रहा है क्या? देख जूम आउट क्या भाई, इतना यार इतना नहीं है वो PS4 जितना सोच रहा है तू। इतना ज्यादा भी नहीं कि हवा में हेडशॉट लगते जाएंगे। चल आजा। मैं हवा में था, मेरी 150 शील्ड थी ना, 150 भाई ने उड़ा दी, आता भी नहीं उतरा था मैं हवा में। Hey Zex, by the way, where are you from, bro? Oh, nice. Do you have Discord? Okay, that's cool. पाकिस्तान में कितना पिंग आता है तुम्हारा? Hello, can you hear me? 90 सही है। 90 but बंदा जिसने मारा था वो काले कलर का बंदा था, एम बोट कर रहा था वो। जब ये आप मर गए है ना? अबे हवा में 150 भाई, हवा में 150 उड़ा दी सुनने ने यार। सारा कॉन्फिडेंस की मदरफक हो जाती है एम बोट के कारण।
मैं तो यार सीजन 8 मेरा बेकार हो गया बिल्कुल। मतलब किल ही नहीं आ रहे मेरे, पता नहीं क्यों मर रहा हूँ, पता नहीं हो उसने क्या ना रहा। भाई जो हेडशॉट मारे ना मेरे सामने जैक से 62 के। हवा हवा में नहीं लगते भाई, तेरे को क्या लगता है हवा में आसान है हेडशॉट मारने? नहीं पीसी यही तो दिक्कत है ना। भाई शराउट से तेरे को भी पता है मैं नहीं लैग लगते। क्यों नहीं हो रहा? तेरे को एक बात पता है मैं लैग क्यों नहीं हो रहा अभी? शराउट से भी नहीं लगते यार। पता है मैं लैग क्यों नहीं हो रहा अभी? बोल। मैंने ना जो आईडीएम है ना उस पे ना स्पीड बांध के यानी कि 50 केबी पर सेकंड बांध के एक डाउनलोड लगा रखा है। तो वो उसको नेट 24 वो यूज करता रह रहा है साथ साथ एक फिक्स डिपॉजिट के साथ। इसके लिए लैग नहीं फील कर रही है। सही है भाई। बात वो नहीं है यार, मतलब भी पोजीशन मिलती नहीं है यार उसके टाइम भाई पे। जमीन तक तो करने देते यार, ये जमीन तक तो करने देते यार पाकिस्तान में 19 पिंग आता है, 90 पिंग आता है, तो हमारा 90 क्यों आ रहा है फिर अभी? वो सच हम पाकिस्तान के साइड में रहते हैं। लोल भूल गया था मैं। आजो आजो आजो। What the fuck? नीचे भागो नीचे भागो। बंधन बिल्कुल बैंडेजेस है। लैग हो रहा हमारे। Fuck! One shot था यार, one shot। हट जाता है यार। तू पीछे एक दीवार के साइड अटक गया था तू मेरे। Oh sorry। Easy, not a one shot bro। Is no but जी जी जी। हट गई होगी ये बंदे की। यार तू बीच में घुस गया था यार, उसके सामने मेरा पिक रह गया। तो अगर घुसता ना ना तो उसके सामने दरवाजे के और सीढ़ियों के तुम आराम से उसके ऊपर चला जाता यार। पता नहीं भाई लैग। हैं? Zion, where you from? बोलिएगा। यार Oops. Oops. Do you wanna play again? इसके बाद मैं मेरे टेम्परेरी अकाउंट से आऊंगा आशीष।
भाई मेरी 90 रह रही है, 90, 91, 92, 95 ऐसी कुछ रह रही है, ना इधर की ना उधर की, बदलने की पड़ता कुछ भी। एक लो है जो ग्राउंड की तरफ है। ये वन शॉट था। कौन से वाली स्किन थी इसकी, मेरे को बता। एक ग्राउंड की तरफ से आया था क्या? इसको दो दो एक चाल एक 20 का मारा और एक 62 का हेडशॉट मिला। इधर शॉट करना है ब्रो। What the? एंटी का शॉट है इसको। यार फोर्टनाइट कुछ कह ही नहीं रही है हाइप के बारे में। अबे उससे पहले तो तेरे को उसने फिनिश ही कर दिया। मैं आया इतनी देर में तो मार आया था उसको यार। उसको ऑलरेडी एक यहाँ पे नंबर हैवी पंप दिया था मैंने, जब आखिरी 10 वाला शॉट बचा था ना वो, तो मैंने मारा। पर भाई वही बात, हमारे लगेंगे ही नहीं। मेरा लगा था भाई 12 पैलेट का लगा था, पर पैलेट ही पैलेट आते हैं भाई, मेरे डैमेज नहीं आते। हैवी पंप चाहिए। नो आई हैव। भाई किसी को तो ढूंढ लो यार, अब मेरे से नहीं खेला जाता। Where is fucking this noob bro? तेरे को पता थ्योरी क्या है आशीष? नई थ्योरी ये सामने here's a big pot। ओके थ्योरी ये है कि जो ये वोल्कानो है ना, ये पूरा डस्टी रिवॉर्ड को भरेगा, तेरे को पता हो तो, लावा से। So basically ओके डेमो है। यप आ जा। देख मैं कहाँ हूँ, देख तू कहाँ है। आया। हुसैन मर गया बेचारा। लावा में खेल रहा है वो तो यार। लामा में खेलेगा भाई, अब मरने वाला बंदे उनमें। क्या हाँ ये बचाओ कोई। बंदे हैं वहाँ पे।
पीछे तो बंदा आ रहा है और तीनों को मार दिया, वाओ। और एक और। तो स्नाइपर पड़ी है। रॉकेट हम देगा। ड्रॉप हियर, लेट्स गो टू सेव टू शेख हसन। क्या था आशीष ये? I'm what? Hello, हेलो, where am I supposed to go? कम टू मी। वो आर बंदा आ यू रहा है डूइंग सामने से। फर्स्ट टाइम? लैग हो गया। यहाँ पे ईस्ट की साइड है। ओके, लैग हो रहा हूँ मैं। हम्म। वो एक ही जगह खड़ा हुआ, स्नाइपर है तो धुंधो। लेजर वो आ पे रहे हूँ। दो। लेजर लेजर लेजर, पूरा गंदा वाला लेजर है। ग्रेनेड फेंक उस पे। तुम लोगों के पास क्या मिडकिट है? नॉकडाउन। एक नॉक्ट है। हम्म। तो मुझे रॉकेट चाहिए। तो है मेरे पास। कहाँ है? पहाड़ के पीछे। मैं क्या खा के आया हूँ आशीष अभी? क्या ले रहा है? Do you guys have medkit? यप, कम टू कम, ओ, आई ड्रॉप यू। इनको इधर वो बुला, सामने एसएमजी वहां पे रख के। बंदे। हाँ हाँ, वो ऊपर है अह, वो। उनको अपने पे बुला। है किधर, नजर तो है। गायब भी हो गए तो। इसको मेडकिट दे देता हूँ पास जाके, थोड़ी इसको खेलना नहीं आता शायद। तेरे को Mr. खेलना आता है Lucid, क्या? what is Not that much. आओ। हो रहा बंदा। लिफ्ट करी। कर लेने दे यार, अपने पे आएंगे बाद में। ये करते रहेंगे आप इधर तक। दिमाग खराब। वो देखो ऊपर, वहां पर। यहाँ पे एमओ पड़ा है। ये क्या?
इतनी रिफ्ट है इनके पास। कहाँ जाना है? सर्कल कहाँ बन रहा है? उधर से चलते हैं। Fucking seriously? Come to us, bro. In the ping Sheikh command, Hassan, come use with the us. display of ipconfig Yeah. command to ensure that your network If you adapter can't- is not in media disconnected state. So let us open command prompt. आशीष and तेरे then को भी issue पसीना this आ रहा है या command. मेरे को ही आ To रहा है? open command prompt, go Circle click में Start, देखा। go to All Programs, Accessories, and click Command Prompt. Go to the root directory, and then issue the command ipconfig. भागने बस। He's a down. He's a down. फिनिश करना लाजमी होता है। पता नहीं। फक यार मेरी बॉस मार दे प्लीज। नाइन के Oops. Oh wait. आशीष रेडी कर भाई। अरे रुक यार, ये पिंक का चक्कर क्या चल रहा है ये देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? अबे क्या तो चक्कर चल रहा है यार पिंक का, इतनी ज्यादा पिंक क्यों आ रही है? आशीष रेडी। Southern
रहा था ना। क्या अबे अकाउंट बदल के आ रहा था ना तू। लीव हो गया तू? अबे 190 पिंग आ रही है। किसने कह दिया 190 आ रही है? मेरी 190 आ रही थी। तो देख तो लेता थोड़ा रुक के भाई, मेरी भी आती है फिर अपने आप कम हो जाती है। मेरी कभी नहीं आती भाई। चल मैं आता हूँ एक आदमी को मार के। तेरी कितनी आ रही है अभी? टिल्टेड आ जा। देख तो लिया कर ना कम से कम, अरे थोड़ी देर अभी वेट करके भी। कौन अभी सा कितनी आ पूछता, रही मैं है? पूछता हूँ ना सर्वर कौन सा, ये पूछ लिया कर। अरे अभी कितनी आ रही तेरी? अभी मेरी भाई 90 आ रही है ब्रो। बस तो मैं समझ गया किसके कारण है अभी से। किसी साइड नहीं। मेरे टाइम तो एक भी बंदे के शॉट मिस नहीं होते, पता नहीं क्यों। यार मैं दिमाग खराब ऐसे हो रहा है, 100 पिंग क्यों आ रही है? हाँ मैं खेलता हूँ जब तो मेरा तो नहीं होता। एक बार ये लगा प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड लगा। इसके एलेक्सा कौन से वाला? एक बार प्लेग्राउंड लगा, प्लेग्राउंड। एलेक्सा की कितने आ रही है? पहले चेक कर लिया कर कितनी पिंग आती है, मतलब एकदम लीव मत किया कर भाई। पूछ लिया कर किसी से। प्लेग्राउंड को खेल लो यार। एक बार चेक करके आ रहे हैं पिंग। ओके तू मेरा है जेनू। अभी इसकी भी ज्यादा आ रही है, एक्सएलआर की भी। हाँ इसके एक्सएलआर की तो यार इतनी आ रही है, 60। भाई मैं क्या करूं, कहाँ देख रहा है तू इसको? क्या हुआ? देख मेरी तो 80 आ रही है, तेरी कितनी आ रही है? मेरी तो 65 आ रही है। हद है यार, पाकिस्तान वाले। 65। क्या करना है? खेलना है क्या? अरे कुछ नहीं, खेलेंगे खेलेंगे। दिमाग खराब चीज है यार, सबकी पिंग ज्यादा आ रही है। क्या यार, ये वाला काम मेरे को गलत लगता है। या मेरी तो 60 आ रही है। अरे स्क्वाड के मेरी भी से ला पैसे लीव आ कर रही दे, है यार। चलते हैं। 20 पिंग ज्यादा आ रही है यार पहले से। और यहाँ पे दिखा रहा है 75। आप ही प्लेग्राउंड। हाँ हाँ ओ प्लेग्राउंड लग गया क्या? दिमाग खराब चीज है यार। अबे कल वाला बंदा जो कि करते है कुछ करेगा बात नहीं है, दूसरों को वो गो और दिलवा दे। रेडी प्लीज। Yeah, I can read. व्हाट? I can ready. Wait, invite me back.
I cannot Ready now? ready. No. You are still not ready? Yeah. I cannot. Wait a second. I tried to make a new lobby. I invited you. Yeah, okay. यार देव का तो 0% पैकेट लॉस आ रहा है, व्हाट द फक। Ready? Join Ashish. लॉल। Ashish. हाँ, Ash. बोल बोल। Ready? Join कर. Join. इसको invite कर को. इसका तो पैकेट लॉस आ ही नहीं रहा, देव का तो। Wait a second. वाह भाई इसके हो वाह। क्या गया? Why he is not joining? फैंटम की 35 पिंग आती है 0% पैकेट लॉस के साथ। सही है। एक लड़की को बुलाऊं? दिमाग खराब हो रहा भाई, किसी को बुला ले तो। अबे वो चली गई गेम में। यार फैंटम की सही पिंग आती है। तेरे को एक फैक्ट पता है? What? फैंटम बाय द वे की 30 पिंग आती है। हैं? फैंटम बाय द वे की 30 पिंग आती है। Hey bro, where you from, bro? I'm from Malaysia. Oh, how much ping you got right now? What? Ping, your ping like on Singapore 0. Yeah. और एक और फैक्ट सुनेगा मोगली? My thing is 3. Oh, फैंटम 30? No. 5, 3 like that. Oh my god, that's good ping, bro. अबे फैंटम की पिंग है ना, कभी भी हाँ। 55 से ऊपर नहीं जाती। फैक्ट्स। Do you have a squad? क्या यार? मेरे को ऐसा क्यों लगता है आशीष कि तू कम्युनिकेशन की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता? वही भाई, क्योंकि मैं स्क्वाड ไอสัตว์มันเก่งไอ้เหี้ยไอ้ตะทุนมามันเก่ง तू ไอ้ खुद สัตว์ देख, अब कितने किल कर ले यहाँ पे देख, सारा टिल्टेड पे उतरा है। एवरीवन ऑन पीछे की तरफ आ जाओ यार।
पबजी खेले मोगली? हेलो Fuck. अबे How पबजी many खेलेगा? trap he have? How many trap he have? क्या खेलेगा? पबजी पबजी। तू खेल ले भाई जाके। तेरा पैकेट लॉस कितना आ रहा है? भाई मेरा कितना ही नहीं आ रहा, तू तेरा इंटरनेट रीबूट करेगा तब आ जाएगा, ठीक है? पता नहीं, मेरा 0 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, प्लस में 95 पिंग भी आ रही है। पता नहीं भाई। भाई वी आर गोइंग टू तिल। तेरे को पता है मोंगराल और ये सारे जीरो पिंग वाले को कभी नहीं मार सकते, क्योंकि मार देगा बट वो बात नहीं है, पर ऐसे नहीं कर सकता वो, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% से लेके 90% बंदों की कभी 30 पिंग आ ही नहीं सकती सर्वर में। कम से कम हर एक की 100 या 60 के बीच में मिलेगी तेरे को पिंग। एक बार तेरा पैकेट लॉस ठीक कर ले। शेख हसन, ये वही है ना जो लास्ट में मिला था मैं?
कर रहे हो क्या तुम लोग? इसकी रोने जैसी शक्ल हुई बढ़िया आशीष के होने। बाय द वे दुबई ने धोखा दे दिया। मतलब दुबई बैंक के पास वापस चला गया देख। वही मेरे को पता। दुबई के लिए इतना कुछ किया मैंने और रिमिक्स ने। हाँ, दोबारा यार मूवी कोई बात नहीं है यार, खत्म कर दे टेरर को। तेरे क्या मुझे वो बोलूँगा वो अपनी क्या अपनी याद है नहीं बना रहा है। By the way, Mowgli sir, I buy pickaxe using your code. It does get 100, sir. Hey, drop me. Enemy on our way. No way, no way. Wanna use the rig? What are you doing, man? Oh, this is reason for you are fall down due to a tree. Am I right? Right there.
को स्ट्रॉम से बाहर लेके जाऊंगा। आशीष, हम उनके पीछे आए थे, ये हमारे पीछे कैसे आ गए उधर तक ना? क्या पता। देख, जैसे हम उतरे हमारे पीछे ही थे ये।
GG man, GG, GG. Nice fight, balance fight, very good. कितनी balance fight होती है यार वोल्ट्राइट में कितनी balance fight होती है ना मुगले। ऐसा लगता ही नहीं है कि यार हमारे पास कुछ और होता तो हम जीत जाते। चल मैं जा रहा हूँ यार, एक बार इसका पार्सल भी देना, जिस बंदे को बेचा था ना मैंने। हाँ इस बंदे को ग्राफिक कार्ड नहीं बेचा था, उसका पार्सल भी पैक करूंगा, फिर दूंगा यार अगले को। चलो ओके बाय बाय मैन।
एक बंदा है मुगली। है मुगली। हेलो मुगली। हेलो। अबे माइक म्यूट, तेरा आवाज नहीं आ रही। हेलो मुगली भैया। हेलो मुगली भैया। This. Look. 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 What? Wait. No, I know what's wrong. I know what's wrong. Let me just join back. It's my Apex is on 60 FPS. Hang on. It does that sometimes. Oh, that's what it is, Hungry. How do you change the options? In your settings. How do you do that? You right click. Video. No. You see it there? You can't do it in video, can you? You got to do it in the. Yes, 100%. You can only do it in launch options. VSync and go all the way to disabled. Okay. So you close this. Okay, what do? You go into my library game. Yeah. Now what? Go to advanced launch options. All right. Now look at your chat. Where is that? Where is that in my little cog? There's a little cog on your play settings. Where? Game prop. Like when you go my library, you see Apex Legends. Yes. Click it.
Yes. Now go under the play button. Ah, There's a little cog. yes. Cog. Games property. Games property. Okay. Go to advanced launch options. Okay. Now look at your chat and copy paste what I'm putting your chat into. Okay. I mean, I'm not looking at your stream. Command line arguments. Yes. Yes. Save. And then save it and go play. Ah, that's what was wrong. What the fuck is that on the top right of my screen? It's your FPS and stuff. It's good. Yeah, but it says 60. Do you have VSync off yet? No. There you go. Ah. Oh my god. Yeah, but it's Yes, you getting still 60 capped. Are you at 140? I don't know. I mean, What's your texture filtering? Oh my god, my game is shitting itself. My game just crashed! It just crashed! rip. Did yours crash? Yeah! Wait, what did you just do to my shit? You got baited, dude. I've hacked you, bro. Frequency 144, dummy. Dude, my shit is 144. Look at my monitor. Look, display settings. Well, Greek, there were some people saying IP leaked, so that you could be getting hacked. I was definitely a troll. How do I check if it's a 144? You go to your desktop, right click. Yeah. Go to NVIDIA control panel. Yeah. My updated efficient lava rune crafting guide. So I do have a lava rune crafting guide on my channel from a few years ago, but it's old, it's outdated, there's a lot of things that have changed since then, and I've been doing a lot of lavas lately, so I thought it was a good time to make a proper updated guide that will give you all the best information. So to start things off with the basic requirements, the only thing that you actually absolutely need to make lava runes is 23 rune crafting. Anything else isn't absolutely required. So from 23 rune crafting onwards, lavas are by far the fastest experience for rune crafting in the game. It is highly recommended that you have at least 67 magic and the lunar diplomacy quest completed so you can use NPC contact. If you don't have NPC contact, then you need to repair your pouches through the abyss or just not use pouches, and this will make lavas a lot slower. It's also highly recommended that you have 82 magic for magic imbue. You can do lavas fine without magic imbue and it's not a huge hindrance, but having it as a convenience, it makes your experience a bit faster, it makes it a bit cheaper, and you get 0 time magic XP, which is also very nice. As far as the items that you'll need while doing lava rune crafting, there's kind of a long checklist of different items. Unless you have 99 rune crafting, then you need a fire tiara to get into the altar. You're of course going to need pure essence, and for every pure essence you use, you also need an earth rune. You will need rings of dueling for teleporting close to the fire altar, and you'll need binding necklaces because if you don't have a binding necklace equipped when you make combination runes, you only have a 50% success rate. So you'll only be making half as many runes as you otherwise would, and only be getting half the XP rate. So those are absolutely that makes it highly recommend contact. The crafting kit for max out, but it is nice directly below your pouches, so it'll be a convenient spot for emptying them. And then just put your rune pouch off to the side. I recommend putting it here so you can have the items that you need to withdraw, like staminas and rings of dueling and binding necklaces, closer to your pouches for easier banking. It is always best to use only your 2 largest pouches that you have, because using any more pouches than that means more banking and more time at the altar emptying your pouches, and because lava laps are so fast, it's better to just use fewer pouches and get faster laps done. It will make your XP rates faster. It's also worth noting that lavas are still upwards of 50k XP per hour without any pouches, so they're still a very good method for low level rune crafting for level 3s or pures or whoever else. As far as your equipment, the only things that you absolutely need are the binding necklace, the dual ring, the fire tiara, either a crafting cape or you just wear some weight reduction stuff, and then if you're using imbue, you want to either have a steam staff or a mist staff and a tome of fire, or you could use a mud staff and a tome of fire, but basically you need
fire and water runes. And the reason that this particular setup is slightly more optimal is because with a Mist Staff and a Tome of Fire, you also have unlimited air runes in addition to the fire and water runes, so you won't need to use any air runes for your NPC contact casts. But the air runes that you use for that are practically negligible, so it's pretty much up to you. You can get away without any Graceful if you just want to wear Boots of Lightness and Penance Gloves. As you can see, you can keep your weight at 0 or below. With this setup, you can throw in your Graceful stuff if you want to, and you could potentially have some room for Fashionscaping while still keeping your weight low if you manage to figure out the right setup. Another option is to have a Spottier cape or something else, some other cape equipped, and have your crafting cape in your inventory. This way, the right-click teleport option will be in your inventory instead of having to switch to here to select the teleport option. And if you're using mouse keys, and you only have one drop-down distance and you're using it for emptying pouches, then the distance moving down your mouse for emptying pouches will be the same as the distance for teleporting with your crafting cape if it's in your inventory. However, if you have it equipped, it's further down because of the boost option here. So basically, if it takes you longer than like 1 or 2 ticks extra to move to your equipment screen and then hit the teleport here rather than doing this in your inventory, then it's probably better to have it this way. You do obviously lose the 1 inventory space, so that's why I say if it takes you a little bit longer to do it this way, then it's probably going to be about the same XP rate overall. So that's an option. It's really up to you. You can figure out what you prefer. As far as bank setup, you just want to have your Pure Essence and your Staminas, Dual Rings, and Binding Necklaces close to the bottom right corner of your bank, so that they're closer to your inventory and close to the deposit inventory button, because you're going to be filling your bank completely so that you can hit deposit inventory without depositing your pouches and your runes and rune pouch and everything. And for me personally, I like to have a separate rune crafting tab and make it exactly the size of 1 page worth of items in your bank, and have my client size so it's the same size as fixed, but just resizable instead. And what this does is makes it so that if you accidentally click your essence and drag down instead of clicking your essence and then hitting the deposit inventory button, then it won't move your bank down like it would right here since I've just added some items there. It's just a little convenience, but I find it helpful. So the next thing I'm going to show you is how to get your bank filled up properly, because as you can see right here, I hit the deposit inventory button and it actually deposited my inventory. So I'm going to unset placeholders, grab this stuff out, and I think I will actually, for demonstration purposes, at least early on in this video, be wearing this and keep this in the inventory for the sake of convenience. I'm going to need to mess up my bank a little bit because I'm used to having my rune pouch over here for farm runs, but I'll do it for the vid. Another thing I'd recommend is to make sure that you don't have placeholders in your bank for any of the stuff that you have equipped, so that way if you accidentally hit the deposit worn items button, then it won't deposit all of your gear and then you'll have to get it back out again. You can disable the deposit worn items button completely right here in your bank settings, but the reason I don't is because if you do that, I guess I can show you, it moves the deposit inventory button way over and it moves the search button like right where the deposit inventory button was. So I'm so used to the button being right below the Pure Essence stack in my bank that it just messes me up. And if you misclick the search button, then it brings you to your main tab and you have to go back to your Runecraft tab, and it's just irritating. So that's why I have the deposit items button still there, so that the deposit inventory will be closer to the Essence, and then I just make sure that none of the equipment that I have on is placeholdered, and then the only thing that will actually be deposited when I hit this button will be a binding necklace, which is no big deal. I'm not going to do that for the sake of this video because I'm wearing gear that I wouldn't normally wear, but yeah, that's a recommendation. So once you have all the items that you need and have all your placeholders released, then you just go to banking. It makes it so instead of having to move your mouse all the way up to here every pouches and do the same thing again. So if you click on the altar manually with Essence in your inventory, it will make fire runes, and you'll probably make a fair amount of fire runes by mistake, but you do have to use the earth runes on the altar to make lava runes. And then after you do that, you just teleport with your crafting cape or your dual ring to the bank and just fill your pouches, empty your inventory, and repeat. Something very important to note is that if you are using NPC contact, which you will be if you don't have 99 runecraft, then you should take the Abyssal Book from the Dark Mage, because it reduces the length of the dialogue option.
options you get with the Dark Mage when you're NPC contacting with them. I actually have gotten rid of mine because I don't need to repair my pouches anymore because that's a perk for having 99 RC, but I'm going to grab it back now just so I can do some, so I can show some example laps of what it'll probably look like for people without 99. So that's what the book looks like, and just store it somewhere in your bank. It doesn't really matter where. And as far as NPC contact goes, once you've contacted the Dark Mage once, then you can just right click on the spell and click Dark Mage again, which makes it easier. You don't have to open up the interface and potentially misclick on other NPCs and stuff like that. So my pouch here is degraded right now, so I'm just going to do that. And if you have the Abyssal Book in your bank, you just need to go through 2 dialogue options, and then your pouch will be repaired, and you're good to go. As far as when you should use NPC contact, the most efficient thing to do is to repair your pouch like 1 lap before it would degrade, so that it never actually does degrade. So that way you don't have to either do a lap with 3 fewer essence every so often, or repair your pouch after it degrades and then have to fill it a little bit more again. So the best way to do that is to keep track of how many laps you've done since the last time you repaired your pouch. The last time I was using NPC contact was a while ago, and they did some updates to the pouch code when they changed it so you don't have to repair pouches also if you have 99 RC. So the last time I did it, I would repair every 9 laps, and I would use just a little timer thing that I could increment to keep track of how many laps I've done since I last repaired. I only did a little bit of laps today without the RC cape on, but I think that it's something like 12 laps now, so you don't repair like every 11 laps, but you probably figure out pretty quickly how many laps you need to do before repairing. But yeah, that is the most optimal thing to do, is keep track of your laps and repair right before. And as far as when in the lap you actually do it, I just NPC contact as I'm running towards the bank, but it doesn't actually really matter where in the lap you do it. So as far as camera angling and zoom and everything like that, I found that I prefer to have my camera angled the way you can see here, with north facing to the left on the screen, and I don't rotate my camera at all, but I do zoom in every time I go to the bank. And the reason that I zoom when I go to the bank is just because it makes it a lot easier to click back on the bank quickly and save potentially 1 or 2 ticks while banking, which will definitely add up slowly over time. So yeah, I just have an F key bound to the settings interface, and I switch to that and zoom out and in each time I do a lap. I've gotten quite used to it, and I definitely recommend giving it a try. It seems like it might be kind of annoying, but once you get used to it, it's really hardly any extra effort, and it makes it so much easier to bank. I think there probably are also some third-party client features you might be able to use that would allow you to do a one-click to zoom all the way in or out, but I haven't actually messed around with that. You can still do one-click to zoom all the way in or out just with the normal client, but you do have to switch to the settings interface. Something that's very important to do is to sync up your binding necklaces and dual rings. It's a little bit less relevant if you aren't using crafting kit to bank, but either way, probably still worth trying to do. You will use exactly the same amount of dual rings as binding necklaces if you are banking at crafting guild, because you use because binding necklaces have 16 charges. And you use 2 charges per lap, since it's 1 charge per inventory of essence you use, and dual rings have 8 charges and use 1 teleport per lap, so you are ending up using 1 of each every 8 laps. So having them synced up makes it a lot easier to keep track of them. You just replace both at the same time, since they'll both degrade on the same lap. Sometimes you might accidentally make fire runes, or you might teleport too soon and not do your second craft or something like that, in which case it will result in having an extra charge or 2 on your binding necklace, and that will put it out of sync with your ring of dueling. And the way to remedy this that I recommend is just continue
rune crafting until your ring of dueling degrades, and then you probably will only have 1 charge left in your binding necklace, which isn't good enough for another lap. So the only way to reset your binding necklace charges, since they remain stackable and don't become separate items when they uncharge is to destroy a binding necklace, and then it will reset your current binding necklace charge back to 16. So once you do run into the point where you have just used up the last charge in your ring of dueling, and you still have like 1 charge left on your binding necklace, then I would just pull out an extra binding necklace from the bank and destroy it. And then that way, the one you have equipped will reset to 16 charges, and then you just have to put on another ring of dueling, and you should be all set. Another thing that's important to understand about lava rune crafting, as opposed to normal, like pretty much any other type of rune crafting, is that there isn't actually any delay on crafting runes at the altar. So you'll notice that I craft the runes at the altar very quickly and then teleport away very quickly. And this is part of the reason that lavas are so fast. Even if this wasn't the case, it's still quite fast, but it saves quite a bit of time since normal rune crafting there's a 5-tick delay between every craft. And because this is the case, it does take a little bit more skill. It's coming in hot. The fuck? Oh my goodness! Oh my god, let's go, dude! What? Two. Yep. Go left. Oh my god. And when I dream, and when I dream, Sit down, big! Run.
Sit down, big. Run. Oh my god! What? No scope is here. Right. Oh. How far did these guys go? Oh no. No! 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 Dude! No! How far did these guys go? Oh no. No! 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 Dude! Oh, yeah. Float just jumped off. Off the map, I think. That's. We'll figure out what happened there. Just go, just go. You get up. I don't have an angle. Oh shoot, you gotta go. Wait, I'm still moving. No! 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 Shoot, you gotta go. Map, I think. That's. We'll figure out what happened there. Just go, just go. You get up. I don't have an angle. Oh shoot, you gotta go. Wait, I'm still moving. No! 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 Where's this dynamite? You take that dynamite, dude. Oh my god, I actually killed him with that dynamite, dude! 200 IQ! Oh my god. That's the cutest thing I've ever seen in my entire life. Ridiculous.
we bounced off another geyser. Oh, it's the best rotation in the game. Oh my god, this thing sounds insane. The ARs literally sound like they're on steroids, dude. Wait, can I bounce in the lava? Can I bounce in the lava? Spaghetti anymore, bro. Do you take fall damage on the lava? Yeah. I thought you bounced. I'll end you! You son of a Later, b. Oh, shit! Victoria? No. For Vinny to jump up, the player from the USA could very well end up taking Vinny's this right if he here. can get a few eliminations. I hope Vinny wins Margin it. traversing upwards. Where is Vinny? I'm trying to track him down. We see he's using the balloon, single balloon strategy to try and get as much height in the late game. Single 40 balloon barely strategy? is way. We see he's using the balloon, single balloon strategy to try and get as much height in the It's a back bling, bro! There's no strategy! To a balloon back bling! He has it on! He can't take high ground with a back bling! Where's this guy? 1v1 corral the. No. Holy Holy No. Holy No, thank you. Get the down from there! Get your ass back here! Back here! Down from there! Oh my god! Ow! Alright, boys, are we gonna hit a smoke one right here? Ah! Can I get him? Oh, shit! ¿Qué pasa? ¿Dónde? Ahí, no lo sé. Están ahí. ¡Dios! ¡Lo ha matado! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Hiding under a rock for a while. Here they go. Here they come. They're getting the crowd hype. That's what we want to see. Myth getting everyone going here. Duos action for them today. Let's see what they can do. That's a trophy. Put it back there. Good lads. Thank you, security. How long
Oh, what? Oh my, what the f just happened? Where's the loot? Have you shot us? Çamu var değil. Outplayed. Good one. Why are we still here? Just. Why are we still here? Just to suffer. Every night. Oh, up here. Okay. I lasered him a little bit. Oh! That guy is so mad! That guy is so mad! Did you hit him with my God! Who just shot me? Lee. He's not even looking at you. You're not moving. You're a turret. You're a turret. You're turreting. Let's do this. Oh my gosh! You didn't even move. You literally stood still. All right, run it back, Club. You got it. I don't see him. Oh, no way! I quick scoped it! No way, let's go! I did not think that was gonna hit at all. I did not. I did not. Oh, hi, Mark. What the? What the? Don't open that. Really? Dude, what? Oh my. What? What just happened? Better player, dude. Excellent.
मी हैं ऊपर अरे है ना गए गए पापा तो घंटे एक पहले ना गए थे भी याद है घंटे एक पहले गए थे ना बनाऊंगा ही मैं ठीक है ठीक है हेलो आ जा रही है हेलो हाँ आ रही है अबे एक बंदे का भी मेरे को ऑफर आया उसने कहा कि वो $700 देगा मुझे हैं अबे एक बंदे का भी ऑफर आया उसने कहा कि वो $700 देगा मुझे और RuneScape में उसके बूस्ट करना है मतलब क्या बूट करना है उसका अरे RuneScape में एक चीज बूस्ट करनी है उसकी और लगभग 12 दिन तक आशीष मार्कोस में किसी को इनवाइट कर सकता है तो देख एक बार एक सेकंड रुक मार्कोस नहीं कर सकता प्रभु ने भी धोखा दे दिया भाई सही है कौन बोल रहा है अबे डैड से बोल रहा था ना अब वो उससे फिर से बात करने लग गया
मैं मतलब सर्वर वगैरह लीव वगैरह तो कुछ करूँगा नहीं, बट इनके में जाऊँगा भी नहीं भाई, क्योंकि मुझे खुद भी प्रैक्टिस करनी है। वरना वही बात अगर लीव करके ना तो ये कहेंगे कि भाई वही बात है, क्लैश स्टार्ट करके लीव कर जाते हो। मैं इसीलिए अपना दूर ही रहूँगा और रहूँगा भी, मतलब रहूँगा भी और ऐसा भी नहीं होगा कि रहूँगा, बस मतलब वही फॉर्मेलिटी वाला काम। Okay, go to display and like resolutions, whatever. Wait. Okay, go to where? Like, अब मेरे पास पूरी परमिशन है किस चीज की? टेरर क्लैन की। मार्कोस में जाके देख। मार्कोस में तू क्या इनवाइट कर सकता है किसी को? अबे कुछ नहीं कर सकता मार्कोस में मैं, और मैं जाके मार्कोस में देख। कुछ कर सकता है मार्कोस में? देखिए इनवाइट भी कर सकता है क्या किसी को? तो change resolution. Yeah. No, it's the refresh rate. Is it on? On 144 hertz or 60? No way! You have a 144 hertz screen and you've never been playing with 144 hertz? That makes a lot. Greek. Omega Lord. You paid $500 for 144 hertz. That makes a lot of sense now. God damn, Greek. That is probably why it crashed, right? That's probably why it crashed, yes. But now we're good, yes? Yes. That's incredible. That's amazing. You could have had 4 screens for the same price with 60 hertz, man. You need to add 144 after the frequency in properties. Can you do that? Can you give me the right command, please, Dove? Amazing. That's amazing. एक बंदा है ना मोगली, 2 साल पहले 144 हर्ट्ज का मॉनिटर लाता है, और उसको 2 साल के बाद पता चलता है कि वो 60 हर्ट्ज पे खेल रहा था 2 साल से। जो एनवीडिया में जाके वो चेंज नहीं करना पड़ता 144, वो वापस बंदे का 60 हर्ट्ज था 2 साल से। We are fucking retarded. उसके बाद क्या फिर सारी चैट हंसती है भाई। एक स्ट्रीमर है, वो 2 साल से 60 हर्ट्ज पे खेलता था, 2 साल से। Boys. Well, don't say that. Retarded. Give me the right command, Stove. You're so fucking boring now. It's unbelievable. Like, turn off G-Sync. £3,000 PC can't run a have £1,000 man can't run at all. 1 Gbps में तो कितने दिन में डाउनलोड कर देगा कोई भी फाइल? क्या कर रहा है?
Turn off G-Sync? How do you turn off G-Sync, my G? Holy shit, this is way better. It's like I'm living in the future. Jesus, that sound is horrible. Holy shit, dude! I'm gonna pop off! I am gonna dude, my shit says 144. Oh my god, I'm gonna pop off, mate. Oh my god. Dude, I'm gonna see everybody before they see me. Like, holy shit, Just 300 invested FPS! £100 in the GGX stocks. Now I've got 10 fucking pounds. 70 FPS now. It was 100 when we were landing. And the jump master. Let's go, baby. Oh my god. It's like I'm a whole new man. Greek, where are you? What are you doing? Dude, I was lagged out. Shut the fuck You're not up. lagged. I'm watching your stream. You're not lagged out. You lost any calories from running around Apex yet? Hashtag fat shroud. Look at this guy. Get your pouches empty quickly enough to one tick. He landed Snobby. He has 2 kills. Oh my god, यार. पता है मैं मेरी अभी हार्ड डिस्क खाली कर रहा हूँ पूरी 1 TB की हार्ड डिस्क में 50 MB बाकी थी मैंने चलो उसको रिफ्रेश ही कर देता हूँ पूरी हार्ड डिस्क को
तेरे को पता है मेरी एपेक्स में 5000 FPS आ रही है। तू एपेक्स खेल रहा है? वही यार आशीष हमसे क्या गलती हुई है यार, मेरे को मेरा बता दिमाग यार। खराब हो जाता है यार फोर्टनाइट में सीरियसली। एक सेकंड देखता हूँ तो भाई सब कुछ स्मूथ चलता है, दूसरे सेकंड देखता हूँ पीछे 7% पैकेट लॉस, 2% पैकेट लॉस, 100 पिंग, मतलब मदरफक कर रखी है। दूसरे साइड मोंगराल खेलता 15.0% पैकेट लॉस। दिमाग खराब चीज। मैं तेरे सामने 4 मैच में नेट की वजह से मरा कि नहीं मरा, मेरे को ये पता नहीं पड़ रहा भी मैं मरा क्यों भाई। मेरे को बस इसी बात का दुख है और किसी बात। तभी मेरे का दिल नहीं करता यार बिल्ड करने का, पता है मैं मतलब मर तो जाऊंगा, बिल्ड नहीं होएगा। You can call me Bloodhound. Listen. Got a good feeling about this area. Possibly. Dropping in. Hang on. Tricked you. Whew. Glad I got that off my chest.
You've got a job to do, so shift your carcass. Yeah, I'm ready for this. I'm so ready for this. I am extremely ready. उसका साउंड मस्त कर दिया इन्होंने, चलाने में दिल करता है। तुप 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 तुप। Is your champion. I'm here, you're not. That's just the way it goes. Hello, my friend. Master, follow me. Say we land here. I say you right here. I say you right here. Enough rounding around. We drop. आशीष तेरा सेकंड फायर हो जाता है, मेरा सेकंड फायर तो मेरा मिडल होता है ना, मैं फायर करता हूँ ना उस टाइम फायर करता हूँ, बट मेरा नहीं आता, उसका बिल्ड आ जाता है उसी टाइम फायर करने के बाद, मतलब लगता भी नहीं उसको, पता नहीं क्यों। Oh, someone got the party started. Shooting. Hostile spotted. Reloading. Enemy down. Quit your whinging. Sending out my decoy. Reloading. Let's go. Target enemy over there. Get out there and bamboozle. Here I go. I have gone. Hostile right here, right in front of me. Getting shot at. जिंदगी दुनिया से परस कपगत सो यारी यारा का Deploying health drone. Target over there. I'm down. Watch out. Two big pock, 6 minis, a gold pump, hunting rifle, and a purple scar. And he's gonna make sure that he farms up to 500, 500, 500 all the way. This guy does not realize that he did not queue up for a pop-up cup. He thinks he is in pop-up cup with 30 points, when in reality he's in a pub game, probably going against some 6-year-olds who faked sick to be home and play Fortnite. So let's see how player 265 handles this stacked lobby with 13 players remaining. He's on the quad crasher. He's driving side to side to make sure he's not an easy target for a snipe. It's a very high level move. You'll notice that he's very unpredictable in his movement, just in case there's a sniper on top of the hills waiting for him. Ooh! One flip. Did not commit to the second one, but uses the booster on the top of this, on the top of the tree. There's a build fight happening in the distance. He's going towards the build fight. Looks like he's looking for some action. He's getting shot at. He's gonna go ahead and stop before he becomes the meat in a sandwich of 2 players. So there's a player in front of him.
player behind him. This is not an ideal spot, but he's gonna hold it down with his hunting rifle, and he's gonna get right up to the corner, and he's gonna peek over the top, take a shot, and let's see how this player reacts. This player seems to be moving a little bit closer, but neither of these players are really committing to a full-on aggressive fight. He's crouching right at the edge of the ramp, and he's gonna peek out and try to go for that hunting rifle headshot. The other player is pushing really high up. The way the other player is building makes me think that he might have glider redeploy, because he could have easily gotten knocked there and fell to his death. So either has glider redeploy or he's crazy. Player 265 editing out the side, currently panicking. He is being knocked down. He's going right back up. He got shotgun. But he needs to play aggressive. He's building a little too much. He needs to look for the shot. Right now, all he's doing is he's building upwards while the enemy player is building up towards him. He's not looking for the opportunity to get the shot off. He's too busy protecting himself. He needs to take a shot. All this building's gonna get you nowhere. There's a person third partying from a distance shooting you guys down potentially. He's getting his shields off. There's the pump in front of him. He's got to be careful. He's right behind you! Throwing down a trap, a panic trap. Finally, he goes aggressive, but it's a little too late. You took way too long. Player 330 just beat you in his pajamas. He wasn't even trying. Player 330 actually coming down from the build fight using walls. There's a player coming out of the storm. He is the llama boy. Takes a little bit of damage. Now, when you run into these llama boys, they're either really good or they're really bad. There's no in between with these guys. If you find Giddy Up or Yeehaw, there's no in between. They're either a really good player or a really bad player. In my experience, regardless of whether they're good or bad, they're very unpredictable, and you got to be careful when you're approaching a Giddy Up player. There he goes, coming over the top, lasering player 330, putting pressure in, editing down on him with the pump. Like I said, this player is not somebody you want to mess with. Anybody actually willing to use this skin in a match, unironically, is not a player you want to mess with. And he showed us right there why he shouldn't be messed with. Player 304 securing a second limb. He's got a good loadout.
स्मूथ हो जाएगा आशीष, तेरा गेम प्ले इतना स्मूथ हो जाएगा कि मतलब तेरे को कुछ फील ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। यार अगर मेरे को 40 पे भी मिल जाए ना 0% पैकेट लॉस के साथ मजा आ जाएगी यार। फील तक नहीं होगा आशीष, तेरी पिंग अगर 20 या 30 के आसपास होगी तेरे को फील तक नहीं होगा कि तूने बिल्ड बनाया है वो। मतलब कब तूने ट्रैप लगा दिया, कब तूने वो लगा दिया, बिल्कुल ही फील नहीं होगा क्योंकि तेरा गेम प्ले ऐसा हो जाएगा। मतलब तू एक लूप सा भी बंदा है ना कि मतलब तेरे को पता है भी तेरा बिल्ड आ जाएगा, तेरे को बस बटन दबाने हैं। तो तेरी मूवमेंट होगी ना, तेरी मूवमेंट होगी सब कुछ मैटर करेगी, हर एक चीज मैटर करेगी, हर एक चीज बिंग हर एक चीज को इम्प्रूव कर देती है। मैं सीरियसली तेरे को एक बात बताऊं, फैंटम को शर्म आ रही मैं यहाँ पे यस रेड यस वाइटी को देख रहा हूँ प्लीज। तो इस बंदे की एग्जैक्ट 25 और 20 के आसपास आ रही है, ठीक है। और इस बंदे को सिंगल % का भी ये नहीं हो रहा, भी ये बंदे को जोर आ रहा, मतलब बिल्ड में जो क्लिक कर रहा है वो दब रहा है वैसे और अपने आप लग रहे हैं। वन पिंग वाला मिलते ही इसकी तो माँ बहने कर गया। तो मेरी स्ट्रीम 0% पैकेट लॉस के साथ कर रहा हूँ ना मैं, इतना स्मूथ है फक भाई, इतना ज्यादा स्मूथ है फक। या मैं सपोर्ट करूँगा
ख्याल से एसूस का मंगवाया तो सही आता है। हैं? अबे 1000 रुपए का वही आता भाई। उसको बस सब कुछ बिल्कुल कर सकता है तू। और अगर पिंग है ना तो जो तू करने लग रहा है ना वो रजिस्टर होएगा, इसीलिए कह रहा हूँ दोनों इक्वल वो इम्पोर्टेंट है भाई। जो अपने पैलेट्स आते हैं वो रजिस्टर होएंगे तो तेरा तो लैगी फील होएगा वो नहीं होएगा तेरे को। वही लैगी तो फील होता है भाई। वो किसी को मारे पहले स्टार्ट है वो मारे पहले चलाए। बट मेरे साथ कभी अगर कोई ऐसा कोई तो मार भाई मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है भाई। मैं बिल्ड लेके तो बिल्ड आता ही अबे वो नहीं कि कोई मेरे को मारे और मेरे को पहले सारे उसके मेरे साथ तो ऐसा। अब इसको सामने टक्कर आई थी एक डस्ट पिंग वाले बंदे से, ये हार गया उससे। तो बेटा वो तेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। बात नहीं है आशीष है, बंदा भी ले लेगा। बात ये है कि हमारे टाइम भी वो आते हैं, क्या कहते हैं, स्पैमर। इनके टाइम कोई नहीं आएगा इसको स्पैम करने। एक बार मैं स्ट्रीम भेज रहा हूँ तेरे को, एक स्ट्रीम को देख दूसरी स्क्रीन में, बता इस बंदे की पिंग कितनी आती हुई। सपना तेरा जिक्र करूं मजनू आड़ा प्यार।
गीत लुकाई। यार इस बंदे की पिंग कितनी आती है यार, तो पिंग का बता दो पहले तो भाई पैकेट लॉस ही रहते थे, अब 1% सेकंड रुक, मैं राउटर को वो करके आता हूँ। हुआ तो ठीक है, वरना डायरेक्ट तार लगा दूंगा इसमें। फ्लेक्स XIE सपने के माँ तेरा मुंह भी काला हो क्या, रात शिखर ढलगी